Good evening, all of you. Am I audible to everyone? Please respond. Okay. All right. So, should we start the session? Okay. So, I think it is starting from question number 53 till 83. Yes. Okay. Congrats to all of you who have got a call from the IFT. I think a lot of people have got a call from the IFT, isn't it? Chalo. So, anyway, at the end of the session, I will make some announcement. All right, so let's start the session today, first of all. So, the question number is from 53 to 83. I think there are roughly approximately 32 questions are there. So, you all can start now. The time limit is definitely, it's going to be 1 hour. Okay, so right now the time is 9 to, okay. So, right now the time is 9 to 10 to. So, you'll be getting 1 hour to complete this entire exercise. Let me give you rights also. Please check at your end. Can you all go through all the slides? Please check at your end. Pakka? Okay. So the time limit is 9:3, or I'll say rather 9:5 to 10:5. And again, your target is to maximize your score. ये target होना चाहिए. It's not necessary to solve each and every question. You should try to maximize your score. So please start now, all of you. I have given you the rights wherein you can scroll through, you can navigate all the questions. So please start, all of you. Slide change हुआ अभी. Now tell me, अब recording हो रही है या नहीं हो रही है? Please check at your end. अब हो रही है? ठीक है, 1 मिनट. अब मैं पोल भी स्टार्ट करता हूँ. जस्ट अ मिनट. आई थिंक कुछ इश्यूज था पहले, हो गया वो बीच में. हैंग हो गया होगा सिस्टम. इट माइट बी पॉसिबल. Okay, now the poll is open. Now, can you all see the poll? Please tell me. A poll open है ना? Yes. So now please start marking your answers, everyone.
Please start marking your answer. Okay, so please mark your answers. Last 1 minute, or sorry, 2 minutes rather. Please mark your answers quickly. Last 40 seconds. Please mark your answers quickly. Last 20 seconds. Okay, so I'm just sharing the result of the poll with all of you. Now, let's start with the discussion. In XAT 2014, for BM, the quant cutoff was 90 percentile.
ठीक है. And for HR, the quant cutoff was 70 percentile. Okay. So for BM it was 90 percentile and for HR it was 70 percentile, which is low. Alright. ये cutoff थी. So later on you can see किसके कितने percentage marks आ रहे हैं. That we'll see one by one. Okay. ठीक है. Cutoff ये थी 90 percentile. And one of my student, ठीक है, he has scored 39.52 percentage marks. इतने marks उसके आए थे. कितने हो गए? Total questions कितने हैं? Can anyone tell me? How many questions are there? 31 or 32? कितने questions हैं अभी आज की इस पेपर में? 53 से 83. 53 to 83, the number of questions is how much? 31. So tell me, what is the 39.52% of 31? 39.52% of 31. क्या आएगा approximately? 10.56. Okay. 12. Yeah, 10.56. Okay, 12. So one of my student, who has got a call that year, he scored 39.52 क्योंकि मेरे पास उसका score था, and his percentile was 98.85 percentile. So at a score of 12 in this paper, the percentile is 98.85. So I think to get a 90, approximately the cutoff will be 12 marks in QA. I'm talking about 12 marks in QA. ठीक है, इस पूरे सेक्शन में. ठीक है. At 12 marks in QA, the percentile was 98.85. So 90 percentile के लिए probably around 7 to 8 marks. 7 to 8 marks होने चाहिए शायद. ठीक है. और HR के लिए और भी कम हो जाएंगे, मे बी 5 to 6 और मे बी 4 to 5, कुछ ऐसा ही होगा. So anyway, should I start with the discussion now? Yes? Okay. Yes, every year for XAT it's more or less same. XAT में usually same ही रहता है. ठीक है. Unless the paper comes out to be very very easy, so it might get changed. Otherwise, more or less it is always going to be same. Okay. So let's start with the discussion of this particular question here one by one. Question number 53. So I can see the poll also one by one so that to see what percentage. Okay. The correct answer of this question number 53 is option 1. Okay. Option 1, 2. Only 32% of you have got it right. 38% has left, but I'll say this was an easy question. It's a very, very straightforward question. It says x17, 3x minus y square minus 2. All these are nothing but they are in AP basically. So if they are in AP, I can say the common difference between the first two terms is 17 minus x. Yes or no? ठीक है. It is equal to 3x plus y square minus 30. Okay. Minus 3x plus y square minus plus 2. The difference between the first two terms and the difference between the last two terms, they are always going to be same. So from here you get an equation. If I simplify this one, ये एक equation आ जाएगी यहाँ से. What is that equation? That will be 3x. X plus 2y square is equal to 45. So I'll get x plus 2y square equal to 45. Again, I can say that the 17 minus x is equal to nothing, but that is 3x minus y square minus 2 minus 17. The difference between the first two terms is equal to difference between the next two terms. क्योंकि AP में है, यहाँ से दूसरी equation आ जाएगी, that is 4x minus 2y square is equal to 36. So solve these two equations. Okay, solve these two equations. दोनों को add कर दो, 2y square will get eliminated and you'll get the value of x which is equal to 13. And once I get x is equal to 13, substitute it in any of the equations. ठीक है. Question is the sum of the four number is divisible by. So x is equal to 13 and y will be comes out to be 4. Okay. So what is the sum of all the four numbers? Add all the four numbers. That's right. If you add all the four numbers, the sum will be comes out to be 76. सारों का sum 76 आ जाएगा. And once I get the sum as 76, so the sum of four number is divisible by 2. 76 is an even number, so it must be divisible by 2. So this was an easy one. I do not know why 68% of you have got it wrong or left this question, but easy now. Should I move ahead? Please tell me. Okay. Question number 2. The correct answer of question number 2 is option 2. The correct answer for this question is option 2. Only, I think,
Yes, again 32% of you have got it right. 43% of you have left, and this one. So this was also doable. Okay, just draw the diagram. It says PQRS. Okay, I'll say, let's say this is PQRS. So this is point P, this is Q, this is R, and this is S. P is equal to 5 unit, QR is equal to 17 unit, RS is equal to 5 unit, and PS is equal to 9 units. The length of the diagonal QS. So I need to identify what is the length of the diagonal QS. I will join QS here. Now we know that there are two triangles. In any triangle, sum of the two sides is always greater than the third side. So from here, the difference, this is 9, this is 5. Okay, so the length of SQ in triangle PSQ. If I consider the triangle PSQ, can I say that the length SQ, it will always lies in the range 9 minus 5 is 4 and 9 plus 5 is 14. ठीक है, ये हो जाएगा. And from the triangle SQR, sum of any two sides is greater than third side. So from here, I'll get SQ, it will lies between 17 minus 5. 17 minus 5 is equal to how much? 12, and 17 plus 5. ठीक है, 17 plus 5 is 22. यही होगा. So what is the value? What all values are there which is satisfying both the conditions? So दोनों का common range लूंगा. Common range क्या आ जाएगा? That SQ it must lies between 12 to 14. So SQ must lies between 12 to 14. So that's why the answer is option number 2. Greater than 12 but less than 14. Is that clear to everyone? Please tell me. Can I move to the next question? ये भी एक बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी पे था. Now, question number 55. 51% of you have said option A. That's right. The correct answer is definitely option A. So 55% of you are right. There is no issue in that. Now it says consider the formula this where all the parameters are positive integers. If omega or W is increased and rest all the things are constant, then what will happen in that case? Okay. So I can say here the value of S is equal to, ठीक है, S is equal to क्या हो जाएगा? Alpha upon, I can say T plus P by omega plus 1. यही है. So S is equal to alpha is some constant term. I can say a constant term upon constant term upon W plus 1. So if I increase, if W is increased, so the moment I say that W is increased, अगर W को increase करूंगा तो ये denominator जो होगा उस पे क्या impact होगा? Please tell me. If the W is increased, and remember all of them are positive integers, denominator क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. Yes, that's right. Denominator will decrease. ठीक है. If the denominator decreases, the overall the value will increase. So that's why the answer is option 1. Overall the value will increase. Is that clear to all of you? Okay. वैल्यू लेके भी अच्छा कर सकते. एक ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी, बट चलो. क्वेश्चन नंबर 56. ठीक है. फॉर 56 द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, ओके, बहुत कम लोगों के आए हैं. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, दैट इज 9. Only 27% of you have got it right. So मुझे डिस्कस करने का इतनी. It says Professor Suman takes a number of quizzes for a course. ठीक है. All the quizzes are out of 100. A student can get an A grade in the course if the average of her score is more than or equal to 90. Grade B and grade C and so on. So there are different grades which has been awarded here. ठीक है. Ramesh is preparing for the last quiz. He realizes that he will score a minimum of 97 to get an A grade. After the quiz, he realizes that he will score 70 and he will just manage a B. How many quiz did Mr. Professor Suman take? ठीक है, यही है. अच्छा, तो let's say the total number of, if I say the number of quiz, the total number of quiz is equal to X, and the score of previous quizzes, जितने भी quizzes है, score of previous quizzes, I am taking it as nothing but that is equal to Y. ठीक है. So Y plus 97, as it says,
he realizes that he will score a minimum of 97, ठीक है, to get an A grade. तो y plus 97 upon x, ठीक है, y plus 97 upon x, और ग्रेड क्या आ जाएगी A, तो ग्रेड A मीन्स कितने मार्क्स आएंगे ग्रेड A में 90, so that is equal to 90, ठीक है. So that is one of the equation. Also it says y plus 70. After the quiz he realizes that he will score 70 and he will just manage a B. So y plus 70 upon x manages a B, just manages a B, it means 87. So that is equal to 87. Yeah. So you just need to solve these two equations, and by solving these two equations you can find out what is the value of x here. ठीक है. अब यहां से मेरे पास ये आ जाएगा y by x plus 97 by x is equal to 90. And y by x plus 70 it is equal to 80, sorry 70 by x is equal to 80 by 7. दोनों जगह y by x को एलिमिनेट कर दो, उससे आंसर आ जाएगा. y इक्वल टू क्या आएगा 713, ठीक है, y इज इक्वल टू 713 आ जाएगा, बट उसकी जरूरत है नहीं, y by x ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे ना ये दोनों, ठीक है. तो इसे डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट x, नंबर ऑफ क्विजेस, एंड नंबर ऑफ क्विजेस विल बी कम्स आउट टू बी 9. So the answer in this case is 9. Is that clear to all of you now? Please tell me yes or no. चले आगे. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 57. Okay. For 57, let me see. The correct answer of question number 57 is option 1. 32% of you have got it right. ठीक है, easy था ये. 32% of you have got it right. A polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d intersect x-axis at 1 and -1 and y-axis at 2. ठीक है. So x-axis at 1. So what does it mean if I say that is f of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. So x axis पे वो कट कर रहा है. Whenever the curves, ठीक है, if the curve cutting at the x axis, so x axis पे जब भी करेगा, the y coordinate is going to be 0. Yes or no? So I can say f of 1 is equal to 0. F of -1 is also equal to 0. And if the curves cuts at the y axis like this one, अगर वो y axis पे कट करेगा तो at this point, ठीक है, x is equal to 0. So f of 0 is equal to 2. So ये तीन इक्वेशंस है. इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, जो भी चाहिए मुझे, ठीक है. सो आई नीड टू बेसिकली सॉल्व दिस वन. सो द इक्वेशन विल बी f1 is equal to 0, which means a plus b plus c plus d is equal to 0. f of -1 is equal to 0. f of -1 is equal to 0 means minus a plus b plus b minus c plus d is equal to 0. इन दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व कर लो. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, ऐड करूंगा मैं, तो आई गेट दैट b plus d is equal to 0. सो वी हैव गॉट दैट b plus d is equal to 0. ठीक है. And from here f0 equal to 2. f0 equal to 2 means I'll get 0 plus 0 plus 0 plus d which is equal to 2. So d is equal to 2. ये आ गया. Substitute it here and I'll get that d is equal to -2. So that's why the answer is option number 1. Is that clear to all of you? Can I move ahead? ये भी doable था. I'll not say कि this is a very very difficult question. Definitely doable. Okay. 58. अब ये तो सबसे इजी था, ये तो सबका सही होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 58. द करेक्ट आंसर फॉर 58 इज ऑप्शन नंबर 2. 41% ऑफ यू हैव गॉट इट राइट. दैट्स राइट. द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. डिस्कस करना है इसे, यस और नो? 41% ऑफ यू हैव गॉट इट राइट. तो आई थिंक 59% लोगों का तो गलत हुआ है ना, तो डिस्कस तो करना ही पड़ेगा. ठीक है. दिस वॉज अ वेरी वेरी इजी कंसिडर. आई से दिस इज -7 एंड दिस इज 8. ठीक है. द टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15. यहाँ पर जय खड़ा है और यहाँ पे वीरू है, एंड जय एंड वीरू टुगेदर दे नीड टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 16. तो डेफिनेटली माय आंसर विल बी इन दिस रेंज.
So if then this range, ठीक है, Jay and Viru, both of them needs to travel how much? Tell me. 15 तो already इन दोनों के बीच में distance है. They need to travel one unit extra. So per person it is 1/2 on the right hand side, and per person on the left hand side it is also 1/2. So my answer is 8 plus 1/2. 8 plus 1/2. One of the answer is 8.5, and the another answer is -7 minus 1/2. -7 minus 1/2 is -7.5. So these are the two values of x. So the sum of these two values, it is nothing but that is equal to 1. So answer is option number 2. By using the distance approach, we can do it quickly. Is that clear? डिस्टेंस अप्रोच पता है ना सबको? अगर नहीं पता है तो फिर नॉर्मल मेथड से कर लेंगे. ओके, 59. ओके, ज्योमेट्री. ऑलराइट, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व. ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन देखते ही तुम लोग छोड़ देते हो क्या? 92% of you have not attempted the question. Trying. Yeah. The correct answer is 10.98, which is option 5. One of you have got it right. हाँ, that's right. इतने लंबा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. 10.5. So, चलो, anyway, I am going to explain this one. Discuss तो कर लेना अभी. ठीक है. There are two windows on the wall of a building that need repairs. A ladder 30 meters long is placed against a wall. Okay. So if I say there is a wall, okay, and a ladder 30 meters long is placed against a wall. That means a ladder 30 meters long is placed against the wall such that it just reaches the first window, which is 26 meters high. तो ये मेरा first window है, जिसकी height कितनी है? 26 meter. Okay. The height of the first window is 26 meter. This total height is equal to 26 meter. ठीक है, this is 26 and this is 30. This is 20, 36. तो ये distance क्या आ जाएगा? If I mark this as, चलो इससे बात भी कर लेंगे. After the first window is fixed, the foot of the ladder is pushed backwards to point B. अच्छा, backwards to point B. Ladder. The foot of the ladder is at point A. So the foot of the ladder is at point A. ठीक है. Foot of the ladder is pushed backwards to B. Okay. So if it is put backwards to B, it will be like this one. कुछ ऐसा आएगा. ठीक है. And this is my point B. So that the ladder can reach the second window. Okay. So this is the second window. We have no idea what is the length of this second window. ठीक है. The angle made by the ladder with the ground is reduced by half. So this angle is equal to theta, and this angle is equal to nothing but that is equal to 2 theta. Okay, ये हो गया. अब क्वेश्चन क्या है? The distance between the point A and B. The distance between the point A and B. So I need to find out this distance. 30, 60 कोई जरूरी तो नहीं है ना. एंगल्स तो कुछ भी हो सकता है. But in any case, this is 26, this is 30. If I say this is point C, what is the length of AC? AC क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 30 स्क्वायर. ठीक है, रूट ऑफ 30 स्क्वायर माइनस 26 स्क्वायर. ठीक है, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 15. ठीक है, 14.966, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 15, आई कैन से. ठीक है, सो इफ दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 15, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा? Cos 2 theta is equal to base upon hypotenuse. यही होता है. तो base upon hypotenuse, that is 15 by 30, which is equal to half, approximately half. So cos 2 theta is equal to half. So it means that is 2 theta is equal to nothing but that is equal to 60 degree, and 2 theta is equal to 60 degree. So it means theta is equal to approximately 30 degree. So I can say this angle is approximately 30 degree है. ठीक है. So what is cos 30? Cos 30 is equal to nothing but that is equal to BA plus AC, which is 15 upon, नहीं, BA upon base upon hypotenuse ना, that is 30. तो यहां से BA की लेंथ आ जाएगी. ठीक है. cos 30 क्या होता है? रूट 3/2. So root 3/2 is equal to BA plus 15 by 30. So from here you can find out what is the value of the length of BA. It will be comes out to be approximately 10.98.
So I'll say it's a difficult because of the given option choices. Options are very very close, तो थोड़ा difficult तो था, but doable था. Can I move ahead if this question is clear to all of you? हाँ हाँ ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, बिकॉज ऑप्शंस भी देखो ना वैसे ही है सारे. 10.996 है, यू कैन टेक इट एज 15, इतना मैटर नहीं करेगा. या फिर रूट्स में, बिकॉज रिमेंबर इन एनी केस यू गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ रूट्स एंड नन ऑफ द ऑप्शंस आर इन रूट्स. तो ऑप्शंस अगर रूट्स में नहीं है तो फिर तो मुझे लेना पड़ेगा ना ऐसे. क्लियर है? शुड आई मूव अहेड? ओके चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 60. लेट मी सी, ये थोड़ा इजी था शायद. Okay, again 76% of you have left. The correct answer for this question is option 3, which is 7. Only 2 of you have got it right. Let's discuss here. Amitabh picks a random integer between 1 and 99, doubles it, and give the result to Shashi. So I'll say Amitabh and Shashi. ठीक है. Amitabh picks a random integer. Let's say he picked the random integer that is x. ठीक है. Let x be the smallest initial number that results in a win for Amitabh. तो x, Amitabh picks x. तो अमिताभ ने उसको डबल किया 2x. ठीक है. And gives the result to Shashi. Each time Shashi gets a number from Amitabh, he adds 50 to the number. तो शशि के पास 2x आया and he added 50. So 2x plus 50 and gives the result back to the Amitabh, who doubles the number again. अमिताभ ने फिर से इसको डबल कर दिया, तो that will become 4x plus 100. And then Shashi will add 50, the number will become 4x plus 150. ठीक है. Then I can say again it will become double, that will be equal to 8x plus nothing but that is equal to 300. And Shashi will make it 8x plus 350. Then it will be comes out to be 16x plus 700. Then it will be comes out to be 16x plus 750. And then I'll say this is 32x plus 1500. और फिर ये ऐसे हो जाएगा 32x plus 1550. ठीक है. The first person whose result is more than 1000 loses the game. The first person whose result is more than 1000 loses the game. ठीक है. And the question is let x be the smallest number that results in a win for Amitabh. अमिताभ को जीतना है. ठीक है. ठीक है. अगर गेम अमिताभ को जीतना है तो क्या होना चाहिए? कौन सा स्टेप लास्ट स्टेप होना चाहिए? कैन आई से द फोर्थ वन एट दिस पर्टिकुलर स्टेप? यस और नो? जो 16x plus 750, अगर मेरा 16x plus 750 if it comes out to be more than 1000, ठीक है, the Shashi will lose here. So from here I'll get that 16x, it has to be greater than nothing but that is 250. So x is nothing but it has to be greater than 15 point something. 16 ones are 16 and 9, 16 6 are 15 point something. So the minimum possible value of x is 16. That is the minimum possible value of x. So the minimum possible value of x is 16. So the sum of the digits of this x is 7. So this was a difficult question, I'll say, not an easy. Is that clear to all of you? Please respond. Okay, chalo. Let's move to question number 61. 7 marks बन गए, good. Question number 61. The correct answer for question number 61 is option 1. 14% of you have got it right. The correct answer is option 1, statement 1. Let's see. Consider 4 natural numbers here. 2 statements are provided below. First, all the 4 numbers are prime. Now, sum of the 2 number is prime as well as the difference of 2 number is prime. So it means out of these 2 number, one of the number is nothing but that is basically odd and one is even.
बिकॉज इफ x इज एन ऑड नंबर एज वेल एज y इज एन ऑड नंबर, तो x प्लस वाई भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, एंड x माइनस वाई भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा. एंड इफ बोथ द नंबर्स आर इवन, okay, we know that there is only one even number which is prime, that is 2. So all the four numbers cannot be prime. So from the first statement we are getting that one of the number is 2. Okay, one of the number is 2, and that number is what, x होगा या y is 2. ठीक है ना? So we have got from this that the y is equal to 2, because x minus y is a natural number and 2 is the smallest even number, so y is equal to 2. So we know that y is equal to 2. So y is equal to 2, and this is x plus 2 and x minus 2 also. ठीक है? Now, अब ये हो गया मेरे पास x plus 2 and 2 and minus 2. So basically we need to say that 2 as well as x minus 2 as well as x plus 2, all the three numbers are prime. ठीक है? तो आई थिंक जो यहाँ पे स्ट्राइक करता है मुझे, ठीक है, एंड 5 and 7 प्रोबेबली, ठीक है ना, 3, 5 and 7, जिनके बीच में डिफरेंस 2 के डिफरेंसेस रहते हैं. ठीक है? सो यू कैन से बेसिकली दैट x minus 2 as well as x plus 2, ये तीनों के तीनों नंबर प्राइम है. सो दैट इज बेसिकली 3, 5, 7. ठीक है? इज दैट क्लियर? So एक यूनिक केस बनता है. So the first statement is individually sufficient. From the first statement we are getting a unique answer that x is 5, y is equal to 2, and you can find out the sum of all the 4 prime numbers. Clear है? First statement sufficient है. Can I move to the second statement? इसे प्रूव करने की जरूरत तो नहीं है ना, दैट्स अ यूनिक केस. इफ यू रिमेंबर द क्वेश्चन व्हिच वी हैड डन इन द क्लास a plus 2 and a plus 4, all the three numbers are prime. There is a unique solution always, 3, 5, 7. ये वही है ना, a plus 2, इसी ऑर्डर में है बेसिकली, a plus 2, a plus 4. तो इसके एक ही यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, 3, 5, 7, जो कैट में भी आया था, कैट 2004. ओके, स्टेटमेंट 2 says that the arithmetic mean of the numbers is greater than 4. Okay, so it says arithmetic mean of the number is greater than 4. So arithmetic mean of the number is greater than 4. So there are a lot of possibilities. Basically the sum of these number is greater than 16. Greater than 16 में तो मैं ऐसे बहुत सारे केस ले सकता हूँ ना. I can take a lot of cases. I can take, let's say x is equal to 5 and y is equal to 3. So 5 plus 3 is 8, 5 minus 3 is 2. In सबका 5 plus 3 8. In here the arithmetic mean is greater than 4. I can take another number. Let's take 6 and 4. So 10, 6 plus 4 is 10, 6 minus 4 is 2. Here also the arithmetic mean is 4. So from the second statement you will not get a unique answer. So that's why the answer is option 1. Is that clear? Should I move ahead? Okay. Let's move to 62. Usually data sufficiency के एक दो questions आते हैं. 62. Let me see what all answers you have marked. 54% of you had said option 5, and that is correct answer. 54% of you had said the answer is option 5, and that is the correct answer. Let me draw the triangle first of all. 46% लोगों का गलत हो गया. It says in that triangle ABC is right angle. ठीक है? We do not know here. We know only one thing. D and E are the midpoints here. अगर मैं तीनों को combine में चलूँ, length of AC, angle B is a right angle. Definitely ये तो मुझे चाहिए ना, A, B and C. अब अगर angle B is right angle है, then we know AB and AC. D and E are the midpoints of AB and AC. D and E are the midpoint of AB and BC. All right. AE is equal to nothing, but that is equal to 19. So AE is equal to 19. I can draw this one. AE is 19. Okay, and CD is equal to 22. CD is equal to 22. So CD is equal to 22. Okay, and the question is find out the length of EC. हो जाएगा. Why? This is nothing but this is the point of intersection of medians, and point of intersection of medians क्योंकि D and E are the midpoints. ठीक है? So if D and E are the medians, तो ये point of intersection of median से centroid है, तो उसके बेसिस पे तो हो जाएगा ना.
तो इसे कंप्लीटली एग्जैक्टली सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं है. Can I move ahead? Here we just need to check whether these statements are sufficient or not. Yes, these statements are sufficient. Okay, let's move to question number 63. Okay, 78% of you have left. The answer of question number 63 is option 3, greater than 14 and less than equal to 15. Let me discuss that. It says there are two circles. C1 and C2 of radius 3 and 8 unit respectively. The common internal tangent T, so there is a common internal tangent also. Let's say this is a common internal tangent. So there is a common internal tangent T touches the circle at point P1 and P2. So I'll say, let's say this is the point P1 and this is the point P2. The line joining the center of this circle intersects T at X. The line joining the center of the circle intersects at X. I'll say, let's say this is point A, this is B, and this is point X. The distance X from the center of this smaller circle is 5 unit. Okay, what is the length of P1, P2? Alright, I'll join this and this. ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ. 5 यूनिट है, ये एंगल हो गया. दिस इज 3, so ये आ गया 4 यूनिट. ठीक है, दिस इज 4 यूनिट एंड रेडियस दूसरे वाले का क्या है 8. एंड कैन यू से these two triangles are similar? If these two triangles are similar, the sides are always in the same proportion, and these two perpendicular sides, they are in the ratio 3:8. So these two, P1x is to xp2, this would be also in the ratio what? 3:8. तो ये लेट्स से अगर ये डिस्टेंस मेरे पास a है तो 4 upon a is equal to nothing but that is 3/8. So from here a is equal to 8 4s are 32/3. 32/3 is equal to 10.66. And if it is 10.66, the total distance will be equal to 14.66. The total distance will be 14.66. Is that clear? Touching नहीं, इंटरनल टैंजेंट है ना, इंटरनल टैंजेंट है, कोई जरूरी नहीं है कि वो टच कर रहे हो. इट्स नॉट नेसेसरी. टचिंग सर्कल ऑन द सेम साइड नहीं. आई मीन P1 पॉइंट ए के ऊपर. नहीं, P1 पॉइंट ए के ऊपर तो मुश्किल है इस तरीके से. तो अगर मैं P1 को बोल रहा हूँ, यू आर सेइंग कि मैं दो ऐसा सर्किल ले लूं ऐसे, लाइक दिस वन यू आर सेइंग, देन इट सेज कॉमन इंटरनल टैंजेंट. कॉमन इंटरनल टैंजेंट यही होता है व्हेन द टू सर्किल्स आर ड्रॉन इन दिस वे, देन इट इज नॉन एज द कॉमन इंटरनल टैंजेंट. P1 P2 लाइन को स्ट्रेट लाइन, हाँ, यू आर सेइंग कि दोनों सर्किल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं. नहीं, अगर दोनों एक दूसरे सर्किल ऐसे ऐसे टच कर रहे हैं, नहीं ऐसे तो टच नहीं करेंगे ना, तो फिर वो टैंजेंट बनेगा ही नहीं. कैसा फिगर बोल रहे हो? नो, आई थिंक यू आर सेइंग दिस वन ना, तुम ऐसा कुछ बोल रहे हो कि यू आर सेइंग कि ऐसा कोई फिगर.
Basically you want to say this figure, am I right? ये फिगर बोल रहे हो भव्य? ये कॉमन इंटरनल टैंजेंट नहीं है ना, दिस इज नॉट अ इंटरनल टैंजेंट, इट हैज बीन मेंशन कॉमन इंटरनल टैंजेंट। इंटरनल टैंजेंट हमेशा ये होता है, ठीक है, इसे एक्सटर्नल टैंजेंट बोलते हैं, कॉमन एक्सटर्नल टैंजेंट, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द केस। इज दैट क्लियर नाउ? चलिए आगे। नहीं मतलब दैट इज ऑल्सो नॉन एज द डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट, नाम है, नाम में डिफरेंस है, दैट्स इट, ठीक है। दैट इज नॉन एज द डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट, दिस इज ऑल्सो नॉन एज द ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट और कॉमन इंटरनल टैंजेंट। उस वाले टैंजेंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट, और दैट इज एक्सटर्नल टैंजेंट। हाँ तो गलत है ना, इंटरनल टैंजेंट इज ऑलवेज लाइक दिस वन, तो ये ध्यान में रखना। ओके 64 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन पॉजिटिव डिवाइजर, ओके लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट इट राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 64, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 14% ऑफ यू हैव गॉट इट राइट, 23, ठीक है। आई से the probability that a random chosen positive divisor, so 10 raised to power 29 is 2 raised to power 29 is to 5 raised to power 29, ठीक है। 5 इसके टोटल फैक्टर्स कितने हैं? द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर दिस नंबर इज 30 into 30, ठीक है। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, ठीक है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, ठीक है, ये होगा। अब द क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम चूजन पॉजिटिव डिवाइजर इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 10 raised to power 23, yes or no? So I'll divide 10 raised to power 29 by 10 raised to power 23, and that will be equal to 10 raised to power 6. और 10 raised to power 6 के कितने फैक्टर्स हैं? What is the total number of factors for 10 raised to power 6? That is equal to 2 raised to power 6 into 5 raised to power 6. That is equal to 7 into 7. That is 49 factors. So the required probability is equal to 29 by 23, 6 ही होता है ना। 24 कहां से लिखा है मैंने? आई हैव नेवर रिटन 24, कहां लिखा है मैंने? 10 raised to power 29 by 10 raised to power 23. This is 29, not this one. 10 raised to power 29 by 10 raised to power 23. I am getting 10 raised to power 6. So 49. So the required probability is 49, or I can say 7 into 7 upon 30 into 30. ठीक है, ये हो गया। And this is equal to 7 by 30 का whole square. So B minus A is equal to 23. So this was an easy question, isn't it? Number system का बहुत ही basic question था. Number system mixed with the probability. Can I move ahead now? Okay. 65. ये थोड़ा difficult question है. Let me see how many of you have got it right. Okay, 97% of you have left this question. केवल एक ही बंदे ने इसे अटेम्प्ट किया है, अब कौन है वो मुझे भी नहीं पता, चेक करना पड़ेगा। द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1. लेट्स से इट सेज सर्कल C1 हैज अ रेडियस ऑफ 3 यूनिट्स। नहीं ठीक है, हाँ यहाँ पे y इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स है, दैट्स राइट, दिस इज y इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स होगा। Circle C1 has a radius of 3 units. The line segment PQ is the only diameter of the circle which is the parallel to x-axis. Okay, so there is a circle, ठीक है, and the line segment PQ, it says the line segment PQ is the only diameter of the circle which is parallel to x-axis. So this line is nothing but this is parallel to x-axis. P and Q are the points on curve given by the equations y equal to a raised to power x, where a is less than 1.
ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू ए रेज टू पावर x ये गिवन है, y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x। ठीक है, तो हाँ, और दूसरा जो है वो लाइन कर रहा है y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए रेज टू पावर x पे। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी ना। इफ आई से y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू, ठीक है, ट्वाइस ऑफ, जस्ट अ मिनट, ये एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कुछ हुआ, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, लेट्स से y कोऑर्डिनेट इज y, x y, so this point q it will be equal to x plus 6 comma y, isn't it? Because the radius is 3, so the diameter is 6 and this line is parallel to x axis, so if its coordinate of x p point p is x, so q will be x plus 6, और vice versa भी हो सकता है, x और x minus 6, but ऐसे I'm just taking at random here. Okay, and let's say this one is passing through a ka power x and this line is passing through 2a का पावर x, तो यहां से y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x आ गया, एंड फ्रॉम द सेकंड आई एम गेटिंग y इज इक्वल टू 2a रेज टू पावर x प्लस 6, so equate these two, that is a raised to power x is equal to 2a raised to power x plus 6, so from here what is the value of a, it will comes out to be, क्या आ जाएगी a की वैल्यू, a का पावर x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a का पावर x इंटू a का पावर 6, यही होगा, a का पावर x and a का पावर 6 will get cancelled and a का पावर 6 is equal to 1 by 2, which means a is equal to nothing but that is equal to 6th root of 1 by 2. ये क्लियर है सबको? प्लीज टेल मी yes or no. Any doubts to anyone in this step? ठीक है. Now the other possibilities which might be there, एक तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इट माइट बी पॉसिबल दिस फर्स्ट पॉइंट इट इज लाइंग ऑन, पॉइंट P इज लाइंग ऑन 2a raised to power x एंड द अदर वन Q इज लाइंग ऑन a का पावर x, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, ठीक है, ट्वाइस ऑफ a raised to power x, और यहां से आएगा y इज इक्वल टू a का पावर x प्लस 6, तो इसे सॉल्व करूंगा तो यहां से आ जाएगी a की वैल्यू 2 raised to power x कैंसिल हो जाएगा 1 by 6, but it is given in the question that the value of a is less than 1, so this case is not possible. Answer is option 1. Clear है ये सबको? Please tell me yes or no before I move to the next question. So this I'll rate it as a difficult. दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, आई कैन से पॉइंट P, ओके, this point is lying on a raised to power x और this point is lying on 2a raised to power x, ठीक है, और पॉसिबिलिटी ये भी सकता है जो फर्स्ट पॉइंट इज लाइंग ऑन द 2a raised to power x एंड द सेकंड पॉइंट इज लाइंग ऑन द a raised to power x, ठीक है, बट हाँ दूसरे केस में, एक केस में यहाँ पे मेरी वैल्यू a इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 1, सो दैट्स व्हाई वी कैन नेगलेक्ट दैट केस, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सर्कल एग्जैक्टली कहां बना हुआ है ये तो मुझे नहीं पता है ना. I can say it might be possible this is point P and this is point Q. So that's why I make the two cases. वो तो एक को जरूरी नहीं है ना P Q में इसी ऑर्डर में ही हो. Okay. 66. The answer for 66 is option 4. Okay, option 4. Only one of you have got it right out of 38 or 39 people who are attending today's session. The answer is option 4. इसे डिस्कस कर लेता हूं. It says there are two squares S1 and S2 with the area 8 and 9 units. All right. So there is one square with area 8 and 8 respectively. S1 is inscribed with the S1 is inscribed within S2 with one corner of S1 on each side of S2. All right. So let me draw another square.
ये हो गया मेरे पास, ठीक है। बाहर वाली की एरिया डेफिनेटली 9 होगी, सो आई कैन से दिस इज 3 एंड दिस इज 3. The corner of the smaller square divides the side of the bigger square in two segments, one of length A, another of length B. Okay, so this is A, ठीक है, this is B, this is A, and B is equal to nothing but that is equal to 3 minus A. A possible value of B by A. Alright, और ये हो गया मेरे पास इसकी एरिया 8 है. अगर एरिया 8 है, what are the sides? 2 root 2. So this is 2 root 2 and this angle is 90 degree. So I'll say B square plus A square is equal to 2 root 2 का whole square. And I need to find out the possible values of B by A. तो substitute कर दो B को A के terms में. B is equal to 3 minus A. So 3 minus A का whole square, ठीक है, plus A square is equal to कम सा रहेगा 2 root 2 का whole square, that is equal to 8. Solve this, you'll get the values of A. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी A स्क्वायर और A स्क्वायर 2A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 1 is equal to 0. So A will be comes out to be minus B, that is 6 plus minus root of B square, that is 36 minus 4AC minus 8 by 2A, that is 2. ये आ जाएगा, तो यहां से A की वैल्यूज आ जाएगी. अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा. व्हाट इज 36 माइनस 8? इक्वेशन सही है ना, B स्क्वायर माइनस 4AC. 36 माइनस 8, 36 माइनस 8 क्या आएगा? 28. 28 आ जाएगा, फिर 2A, तो नीचे 2 into 2 आएगा. So this implies A is equal to approximately it will become to be 3 by 2 plus minus root 7 by 2. So you need to take a approximate, you need to find out what is the approximate value of A. तो A की जो approximate value आ जाएगी वो 0.18 आ जाएगी. root 7 को approximate कर लो, ठीक है. So and by substituting it in any other equations, you'll get the approximate value of B, which is 2.82, and then you can find out what is B by A. So B by A actually comes out to be 15.66. Is that clear to all of you? So this is also a difficult question. Reason being क्योंकि approximate answers find out करने हैं, इसलिए. Can I move to the next question? Please tell me if this is clear to all of you. चले आगे. राघव, भव्य, तन्मय and everyone. Okay. 67. Let me see the answers of this question. 67. Okay. इसे भी बस केवल एक ही बंदे ने attempt किया. That's it. Everyone has left this question. The correct answer of this question is option 4. So again, no one has got the correct answer. Should I discuss this question? Yes. The question ये भी difficult बन गया, ये greater than or less than sign के कारण. Now, so there is a right circular inverted cone. So let me take the right circular inverted cone. ये मैंने एक कोन ले लिया है, right circular inverted cone. ये हो गए. Is 26. The diameter is nothing but that is 26. Okay, diameter is of this cone is equal to 26. So I can say this length is equal to 26 from here to here. This length is 26 meter. A cylindrical pipe 5 millimeter in radius is attached to the surface of a cone at point. The perpendicular distance between the point and the base is 15. Okay, just a minute.
ऐसे हो गया, ये हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 13, हाइट इज व्हाट, टोटल हाइट गिवन है क्या, ओके। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एंड द बेस इज 15। सो एक सिलेंड्रिकल पाइप है, ऑलराइट, तो सिलेंड्रिकल पाइप को मैं लगा देता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट, इट इज लाइक दिस वन। A cylindrical pipe 5 millimeter in radius is attached to the surface of the cone at the pipe. So this is the cylindrical pipe. ठीक है. The perpendicular distance between the point and the base is equal to 15. Okay. So I'm just going to represent this length is equal to 15 from here to here. This length is 15. This green line is 15. The distance from the edge of the base to the point is 17. The distance from the edge of the base to the point is equal to 17. Okay. So this distance is equal to 17. This is 17. So let me mark the points. मैं ना नाम दे देता हूँ तो easy हो जाएगा explain करने में मुझे. This is point A, this is point B, this is point C, this is point D, this is point E. So it is given that DE is equal to 17. ठीक है, D is equal to 17, नहीं, DC is equal to 17 and DE is equal to 15. So can anyone tell me what is the length of EC? 8, 15, 17 का triplet है ना? EC will be comes out to be 8. That's right, Bravo. EC is definitely equal to 8. So if EC is equal to 8, what is the length of BE? BE is equal to 5. ठीक है, B is equal to 5. ये आ गया मेरे पास. ठीक है. Okay. Let's say ये जो height है, this particular height is denoted by H. अब मुझे ये height find out करनी है. So I can say, I can use the property of similar triangles A, B, C, D, E. ये मैं point F ले लेता हूँ. So you can see that the triangle AFD is similar to the triangle ABC. Triangle AFD is similar to the triangle ABC. So H height upon H plus 15 is equal to 5 by 13. Clear है ये? ये distance तो 5 होगी ना? This is 5. So from here you can find out the value of H. क्या आ जाएगा H? Can anyone tell me? What is the value of H now? 13H minus 5H, 25 by 8. So that's right. H is equal to 25 by 8. So I'm just writing H is equal. Now the distance here हो गया. If water flows at the rate of 10 meters per minute through the pipe, how much time would elapse before water stops coming out? So 75 by 8. Okay. So H will be comes out to be 75 by 8. ये 75 by 8 हो गया. अच्छा, what is the volume of the water that overflows? Volume of water which overflows. Can I say that is equal to 1 by 3 into pi into क्या होता है r square into h, that is equal to 13 square. ठीक है, r square 13 square into total height is equal to क्या हो जाएगा मेरे पास 15 plus 75 by 8. ठीक है, minus 5 square into 75 by 8. यही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द वाटर ओवरफ्लोज. टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम माइनस इसके ऊपर वाला वैल्यू वॉल्यूम. और बेसिकली आई हैव कैलकुलेटेड दिस मच वॉल्यूम. दिस इज द टोटल वॉल्यूम विच विल ओवरफ्लो. ये सारे पाइप से ये बाहर नीचे की साइड निकल जाएंगे. सो दिस इज द टोटल वॉल्यूम विच विल ओवरफ्लो. Is that clear to all of you?
ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर विच विल बी ओवरफ्लो. And what is the volume of the water flowing in 1 minute? It says if water flows at the rate of 10 meters per minute through the pipe. ठीक है, 10 meters per minute through the pipe. How much time? तो ये टोटल इतना वाटर फ्लो हो रहा है और कितना वाटर फ्लो हो रहा है पर मिनट, इससे मुझे डिवाइड करना होगा. So what is the volume of the water flowing per minute? And now remember, it's a cylindrical pipe. If the pipe is like this one, it's a cylindrical pipe. ठीक है, with a radius of how much? 0.5 mm in radius. तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन तो ये होगा, बहुत लोगों को ये नहीं पता हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम mm टू सेंटीमीटर. 5 mm मीन्स नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर. ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर? पाई आर, ठीक है ना, क्रॉस एरिया ऑफ दिस पाइप. जो पाइप होगी एक सिलेंड्रिकल पाइप, इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी जो यहाँ से वाटर फ्लो करेगा, दिस इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर इंटू 10 मीटर्स पर मिनट. 10 मीटर्स पर मिनट, तो उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 मीटर 10 मीटर पर मिनट मीन्स 1000 cubic centimeter. This, and divide these two and that will give you the final answer. Is that clear to all of you? And the options are also very very close. 5 to 5.2, then 5.2 से, तो options are very very close. तो उससे यही पता चलता है कि क्वेश्चन छोड़ने वाला था. The exact answer, ठीक है, the exact answer of this question is 5.18. If you divide these two, the answer is 5.18 आएगा. So just looking at the options also you can beat the question, because options are very very close. That's the best part of XAT actually. बिल्कुल fresh questions होते हैं. You can see all the questions are बिल्कुल fresh. कोई इधर ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि कहीं से उठा के डाल दिया किसी इधर उधर से, कुछ भी नहीं. Every question is fresh. Completely new questions. हर साल. तो मैं XAT के क्वेश्चन कहीं किसी भी एग्जाम में पहले वाले नहीं आएंगे. Yes, that's right. हाँ, ट्रिकी भी होता है. They are also not straightforward. That's right. It's not like this one कि that they are very very straightforward. वो भी नहीं होते हैं, ट्रिकी होते हैं. Okay, now come to question number 68. Hmm. 68. Let me see how many of you got it right. Okay. The correct answer for question number 68 is option 3, 3 by 16. Okay, 3 of you have got it right. The answer is 3 by 16. Let me discuss it. Aditya has a total of 18 red balls and 18 red and blue marbles in 2 bags. Each bag has a marble of both colors. So Aditya has got how many bags? 2 bags. So I can say bag 1 and bag 2. Bag 1 and bag 2. ठीक है. अच्छा, कितने रेड है कितने क्या है ये सब कहीं भी कुछ भी गिवन नहीं है. A marble, it's Aditya has a total of 18 marbles, 18 red and blue marbles in total bags. Each bag has a marbles of both the colors. ठीक है. अब इसमें bag 1 में I'll say let's say red is equal to x1, ठीक है, and blue is nothing but that is equal to y1. Bag 2 में red is x2 and blue is equal to y2. A marble is randomly drawn from the first bag, followed by another randomly drawn from the second bag. The probability of both being red is 5 by 16. पहले से red आने की probability क्या है? Please tell me. First वाले से red आने की probability क्या होगी? What is the probability that both the marbles are in red color? तो इसमें कुछ cases ही बनाने पड़ेंगे. I can say x1 upon x1 plus y1, isn't it? x1 upon x1 plus y1 into a marble is randomly drawn from the first bag, followed by another randomly drawn from the second bag. The probability that of both being red, second से red आने की probability क्या होगी फिर?
that will be equal to x2 upon x2 plus y2, and this product is equal to 5/16. यही होगा. यस और नो. तो ये यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी दैट x1 x2 अपॉन x1 प्लस y1 इंटू x2 प्लस y2. अब इसे हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा. और तो इसमें कुछ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ मार्बल्स बीइंग ब्लू. नहीं, बैग चूज नहीं करेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन कि दोनों बैग से एक एक निकालना है प्रत्युत. सो दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड टू चूज द बैग. अगर गिवन होता ना कि वन बॉल इज पिक्ड आउट एट रैंडम फ्रॉम एनी वन ऑफ द बॉल, देन बैग की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/2 करती. तो यहाँ पे ये करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है. ठीक है. अच्छा, अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ. नहीं, ऐसे भी नहीं कर सकते. ये कहां से आ जाएगा. प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बीइंग ब्लू, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बीइंग ब्लू मुझे फाइंड आउट करना है y1 अपॉन x1 प्लस y1 इंटू y2 अपॉन x2 प्लस y2. ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो बेसिकली इफ यू लुक एट हियर, if I say that the x1 x2 is equal to 5a, ठीक है, और x1 plus y1 into x2 plus y2 is equal to 16a, and now I need to calculate what is y1 y2 in terms of a. ठीक है, y1 y2 in terms of a अगर मुझे निकालना है. टोटल बैग बॉल्स कितने, 18 है ना. और मुझे ये भी पता है दैट इज x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2. This total is equal to 18 also. This total value is equal to 18 also. x1 इंटू x2 अगर 5 का मल्टीपल है, देखो ऐसे मैं कर सकता हूं, अगर x1 इंटू x2 5 का मल्टीपल है, सो द पॉसिबिलिटी इज कि x1 x2 अगर 5 के मल्टीपल है तो केसेस बनाने पड़ेंगे. x1 x2, एक को 1 ले लो, एक को 5 ले लो ना, या फिर x1 इंटू x2 प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कैन बी इक्वल टू 10 ऑल्सो. या 5 कुछ भी हो सकता है. नहीं, x1 प्लस y1 इज नॉट 18. टोटल बॉल्स इज 18. रिमेंबर, टोटल बॉल ही 18 है. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 18. ठीक है, दोनों बॉल्स मिला के. तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. अब इसमें केसेस बनाओगे, काफी केसेस बनेंगे. जस्ट अ मिनट, कोई इजी तरीका मुझे सोचने को इसका. वही है, हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा. ठीक है, 1 5, हाँ मतलब आई कैन से 1 and 5. x1 into x2 should be a multiple of 5. So x1 into x2 should be a multiple of 5. तो एक 1 into 5 हो सकता है ना, और 10 भी हो सकता है, दैट इज 2 into 5 भी हो सकता है 10. दो, एक में 2 बॉल, एक में 5 बॉल, इस तरीके से भी हो सकते हैं. तो ये केसेस बना के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये तो. Let me think if there is any other easier approach. 5/10 into 5/8, Mohit is saying. हाँ, ये वाला केस यू आर सेइंग कि इसे मैं लिख सकता हूं 5/10 into 5/8. हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है.
अच्छा, yes, that logic will work. Just a minute. देखो, मुझे ये तो पता है कि इन दोनों का सम टोटल 18 चाहिए ना, इन दोनों का सम टोटल 18 चाहिए. सो अब अगर इन दोनों का टोटल सम 18 चाहिए, सो विल ट्राई टू राइट डाउन. वैसे ही कुछ केसेस बनाते हैं कि इन दोनों का सम 18 आ जाए. ये पता है मुझे, x1 plus y1 and x2 plus y2, the sum must be equal to 18. So the cases might like this one, I can say 5 by 10 into 5 by 8. तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 5 by 16. ये केस पॉसिबल है, दैट्स राइट. और ऐसा कोई केस पॉसिबल है कि नीचे सम 18 आ जाए, क्योंकि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 5 by 16. तो अगर इससे करोगे तो इफ आई टेक x1 इज इक्वल टू 5 एंड y1 इज इक्वल टू लेट्स से 5, दूसरे में अगर मैं x2 इक्वल टू 5 लेता हूं, y2 इज इक्वल टू 3, तो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? दैट इज 5 by 10 इंटू 3 by 8. 8 नहीं करना, मतलब देर इज नो अदर वे. थोड़ी बहुत हिट एंड ट्रायल करनी पड़ेंगे. क्लियर है ये? और देखो एक तरीका और है, मैं बता देता हूं, मतलब हिंट यहीं से मिलेगा. दैट इज 5 by 16. इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. तो आई कैन यू कैन ट्राई टू मेक अ कॉम्बिनेशन लाइक दिस वन. लेट्स से 5 by 8 इंटू 1 by 2, क्योंकि दोनों ही केस में प्रोबेबिलिटी 1 से तो कम होगी ना. तो 5 by 8 इंटू 1 by 2, एंड 1 by 2 इज नथिंग बट आई कैन से दैट इज 5 by 8 इंटू, ये हो गया 1 by 2, तो ये हो गया 5 by 10. ठीक है, एंड देन दिस कॉम्बिनेशन विल वर्क. दूसरा कॉम्बिनेशन और कुछ बन ही नहीं सकता ना. We can't make. Remember, the denominator has to be more than numerator. Denominator has to be more than numerator. So that is the only possible combination. और मैं दूसरा केस अगर ऐसे बनाना चाहूँ तो 5 by 4 into 1 by 4, no, that is not possible. 5 by 4 तो probability हो ही नहीं सकती है. So that's why there is only one possibility, that is 5 by 8 into 1 by 2. Yes, that's right. 5 prime है, 5 cannot be broken down further. So that's why this is the only possibility. 5 by 8 into 1 by 2. Product of two fractions which is less than 1. क्लियर है आप सबको? कैन आई मूव अहेड? तो यही इससे ये नाउ 69. अगेन ज्योमेट्री, आई एम श्योर ये भी किसी ने नहीं किया होगा. 69 का द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 69 इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. ठीक है, नन ऑफ यू हैव गॉट इट राइट. दैट्स अनदर डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री के. कंसिडर रेक्टेंगल ABCD एंड नाउ एवरी ईयर दे सेइंग कि हम पेपर इजी करेंगे, इजी करेंगे. कितना भी इजी कर लो, तुमने 16, 15, 14 तीनों साल के पेपर सॉल्व किया है. ऐसा कोई पेपर था कि जो बहुत ही इजी हो? नाउ क्या समझ में नहीं आया प्रियंका? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या जो अभी बताया मैंने? कौन सा? विच क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा ना. नहीं, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन आस्क मी. जस्ट अ मिनट. हाँ, ये मैं करता हूँ. खत्म ही होने वाला है, 3-4 क्वेश्चन और हैं. अच्छा, डाउट नहीं है, यू आर सेइंग कि ये पूरा पेपर एज इट. अब तो ओके, विल नॉट डू DI, ये अभी कंप्लीट कर देंगे. क्वांट का भी कर देंगे. ABCD. It's a rectangle of area 90 units. The point P and Q trisects here. So this is point P, this is point Q.
So ये trisect कर रहा है, so I can say this is 2x, this is 2x, this is 2x, for example. And R bisects CD, so this is R. ये bisect हो रहा है, so this is 3x, this is 3x. And then you can join, you can draw a triangle PQR. So I can draw a triangle PQR. ठीक है? The diagonal AC intersects the line segment PR at the point M and N. So this is point M and this is point N. What is the area of the quadrilateral PQMN? So we need to identify what is the area of quadrilateral PQMN. Chalo, let's say. Okay. This is the case here. Now, one of the basic advantages of difficult paper is that you just need to find out the easier questions. तो ये एक बहुत बड़ा advantage है. Now, let's say if I need to find out what is the area of the triangle PQR, please tell me. What is the area of the triangle PQR? ये तो calculate कर सकते हो ना? What is the area of the triangle PQR? Please tell me this thing first of all. पहला point. That's right. 15. ठीक है. That's right. Perfectly fine. The answer is definitely nothing but that is equal to 15. ठीक है. Even if I take, let's say this is y. This side is BC is y. So area of the rectangle, और वैसे भी orally भी कर सकते हो इसे. ठीक है. Area of the rectangle is equal to 6x into y, that is equal to 90. So xy is equal to 15. And the area of the triangle PQR is equal to base, that is 2x, half into base is 2x, and the height is equal to y. So that is equal to xy. So basically the area of the triangle PQR is 15. So I can write down that the area of the triangle PQR is equal to 15. Now once I get the area of the triangle PQR, if I consider the triangle APM, can I say triangle APM is similar to the triangle, ठीक है, that is equal to APM CRM? Yes or no? Why? Because these two lines are parallel. ठीक है, this angle is theta, this angle is theta. ठीक है, और ये angle अगर अल्फा ले लेता हूं तो ये angle भी अल्फा होगा. So these two triangles are similar. If the two triangles are similar, sides should be in the same proportion. Yes or no? And what are the sides? What are the ratio of the sides? Please tell me. क्या आ गया side? Can I say यहाँ पे जो bases है in these two triangles, they are in what ratio? 2:3. So if they are in the ratio 2:3, it means if these two triangles are similar, what is the ratio of PM upon MR? PM upon MR is equal to how much? So PM upon MR, they are in the ratio 2:3. Is that clear to all of you till this step? That PM upon MR is equal to 2:3. ठीक है, ये साइड और ये साइड की रेशियो 2:3 हो गई. Now similarly I can say there is one more triangle. Yes, triangle ANQ. Triangle ANQ is similar to the triangle CRN. Just look at here. Triangle ANQ is equal to triangle CRN. Yes or no? क्योंकि ये एंगल अगर मैं लेता हूं बीटा, तो ये एंगल हो गया बीटा. ठीक है, और ये अल्फा अल्फा ये है. So these two triangles are similar. And if these two triangles are similar, what are the ratio of the sides? Can I say sides are in the same proportion? And sides are in the same proportion. So AQ in this case is total is 4x, और यहाँ पे RX is 3. So sides are in the same proportion. So I'm getting 4:3, which means QN is to NR. QN is to NR. They are in the ratio 4:3. They are in the ratio 4:3. Is that clear to all of you now? PM is to MR is 2:3 and QN is to NR is equal to 4:3. Any doubts to anyone till this step? Please tell me. देख लो अच्छी तरह से. मैंने डायरेक्टली लिख दिया, instead of writing the ratio of all the sides, I have written the ratios directly. Similar triangle की property use करके. Okay. So can I move to the next point? So now you have got a triangle. ठीक है. Now you just need to concentrate on the triangle PQR. बस PQR पे concentrate करो और बाकी सब आ जाएगा. We'll try to find out the area of this green region.
अब एरिया ऑफ दिस ग्रीन रीजन हाउ विल आई आइडेंटिफाई, लेट्स सी। बहुत ही बेसिक फंडा जो अभी मैंने बताया भी था क्लास में, पीएम इज टू एमआर इज 2:3, दिस साइड इज 2A, दिस साइड इज 3A, ठीक है। एंड देन क्यूएन इज टू एनआर इज इक्वल टू 4:3, क्यूएन इज 4B, दिस इज 4B एंड दिस इज 3B। तो कैन एनीवन टेल मी द ग्रीन एरिया? कैन आई से दिस इज इक्वल टू 3A by 5A into 3B by 7B which is equal to 15। ये पता है ना ये किस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं? कैन ऑल ऑफ यू रिकॉल? बाय यूजिंग द वो साइन थीटा वाला, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस एंगल, ठीक है, हाफ ए बी साइन थीटा वाला से डायरेक्टली जो करेंगे। सो यस दैट्स राइट, उसी से। सो यहां से ए बी तो 3A by 5A इंटू 3B by सॉरी इंटू 15, ये आ गया इसकी एरिया। सो दिस विल बी कम्स आउट टू बी हाउ मच, 9 by 35 इंटू 15, और ये जाएगा 5 3s are 15, so 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 by 7। So area of the green region is 27 by 7. So area of this blue region is equal to 15 minus 27 by 7. 15 sevens are 105, 105 minus 27 by 7. That will be the answer, which will be comes out to be approximately आएगा मेरे ख्याल से 11 point something और 11.14 आएगा, 11.14 आएगा। So answer is option number 4. Is that clear to all of you? So this was also a very, very tough question. PAQR अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो इससे PR की लेंथ निकाल लो। कैसे निकालोगे आशीष बताओ? क्या PQ की लेंथ पता है तुम्हें? डू यू नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ? 1। अच्छा, किसने बोला 1? कहां से 1? नहीं पता है ना मुझे। वी डू नॉट नो व्हाट आर द लेंथ ऑफ द, अगर रेक्टेंगल की साइड्स की लेंथ आ गई तब तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा ना। नन ऑफ द साइड्स आर गिवन। ओके, क्वेश्चन नंबर 70। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 70 इज ऑप्शन नंबर 5, आई थिंक। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। इसे बता देता हूं मैं। 297 in base B. So 297 in base B is equal to, डेसिमल में कन्वर्टेड, दैट इज 2B स्क्वायर प्लस 9B प्लस 7। तो इसे फैक्टराइज करके ये आ जाता है, दिस इज इक्वल टू B प्लस 1 इंटू 2B प्लस 7। द अदर नंबर इज 792 in base B. 792 in base B is equal to 7B square plus 9B plus 2. So this will be comes out to be B plus 1 into 7B plus 2. And 297 is a factor of 792, which means B plus 1 into 7B plus 2 is divisible by B plus 1 into 2B plus 7. This must be equal to some natural number, or this must be equal to an integer. तो ये कैंसिल हो गए, तो 7B plus 2 upon 2B plus 7. This must be an integer. So from the given option, substitute different values of B and check which value it is coming out to be. एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा 19। Is that clear now? Can I move ahead? चार क्वेश्चन और हैं क्या? There are 4 more questions are remaining. चलो जल्दी कंप्लीट कर देते हैं। बस नहीं, कंप्लीट कर देते हैं ना, 4 ही क्वेश्चन रह गए, कल के लिए क्यों छोड़े। $71 अ टीचर नोटिस। अच्छा 70, बस नहीं यार, 4 क्वांट फिनिश कर देते हैं, केवल क्वांट फिनिश कर देते हैं, अदरवाइज वो पेंडिंग दे देगा। विल डू टीआई। अरे ये क्या बात हुई? 10 मिनट लगेंगे, ओनली 10 मिनट्स, 10 मोर मिनट, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे।
अच्छा कोई बात नहीं, 1 मिनट यार, तुम जितने देर में वो ये कर रहे हो ना उतने देर में मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा। ये अब इजी है, आगे वाले सारे क्वेश्चन इजी हैं, दे आर नॉट डिफिकल्ट। और 71 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 5, डिस्कस ही करना पड़ेगा। चल, दो लोगों का सही है। अ टीचर नोटिस्ड a strange distribution of marks in the exam. There were only 3 distinct scores, that is 6, 8, and 20. So 6, 8, and 20. The mode of the distribution was 8. ठीक है, the mode of the distribution was 8. The sum of the scores of all the students was 504. The number of students is in the most populated category was equal to the sum of the numbers. अच्छा, अब it is based on nothing but that is the mean, median and mode. ठीक है, if I say X student, I am saying the number of students. Number of students who got 6 is X, number of students who got 8 is Y, and number of students who got 20 is equal to Z. So from here I'll get that is 6X plus 8Y plus 20Z. Total marks is equal to 504. Okay, so from here I'll get that value is equal to nothing but इसे solve simplify करके क्या आ जाएगा, X plus 2Z is equal to Y. सब मीन मीडियन मोड वाला रिलेशन। ओके, अभी बता देता हूँ, ये हो जाएगा। तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी, दैट एक्स प्लस 2z इज इक्वल टू वाई। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मोड, कैन एनीवन टेल मी? मोड का मतलब क्या होता है? मीन तो यू ऑल नो, मीन इज सिंपली द अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय। यस, मोड इज नथिंग बट बेसिकली समथिंग जो सबसे ज्यादा रिपीट होगा, and the mode of distribution was 8. So we know that y is definitely greater than x and z, ये होना चाहिए ना। और ये जो इक्वेशन है ये गिवन है यहाँ पे, द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वाज 8, तो ये y is coming out to be maximum number of times. And it also says the number of students in the most populated category is 8, that is y, was equal to the sum of the number of students with the lowest score and twice the number of students with the highest score. So that's why we have got this equation. So now we have got two equations, two variable, sorry, two equations. ये दो equations आ गए, clear है सबको? From here we can eliminate x, किसी एक को eliminate कर दो, ठीक है। If I eliminate x, let's say multiply this by 6 and take a difference, तो ये आ जाएगा यहाँ से, दूसरी इक्वेशन जो आ जाएगी क्या आ जाएगी, 8y, 6 2 जा, अच्छा 8y ये हो जाएगा 6y, 14y plus 8z is equal to 504. From here I'll get that is 7y plus 4z is equal to 252. And I need to find out its integral solution. 7y plus 4z is equal to 252. So इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए मुझे, तो इसके एक ही इंटीग्रल सॉल्यूशंस आएंगे बाय यूजिंग h and time. y will be comes out to be 32 and x is equal to, sorry, y is 32 and z is equal to 7. ठीक है, so y 36 नहीं आएगा, 32 आएगा. So y is 32, z is 7. Substitute these values in any of the equation, you can find out that x is equal to nothing but that is equal to 18. So number of students is 32 plus 7 plus 18, which is equal to 57. So this was also a difficult question. Is that clear to all of you? Can I move ahead? Mode ये होता है जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर होता है, दैट इज नॉन एज द मोड। 72 तो मैक्सिमम, 72 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, 9. ओनली 4 और 5 ऑफ यू हैव गॉट इट राइट। बता देता हूं मैं, अच्छा ये क्या हो गया, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 plus 1/4 and so on till 1/13 is equal to x by 13 factorial. X is equal to, just wait, 13 factorial by 1 plus 13 factorial by 2 plus 13 factorial by 3 and so on till 13 factorial by 13.
ठीक है. The question is if x is divided by 11, so I need to divide this entire thing by 11. So can I say everything will be divisible by 11? 11 से इसे divide करना है ना. अब यहां बीच में जो 11 है उसको छोड़ के can I say just a minute, let me write it down. 13 factorial by 1 plus 13 factorial by 2 plus 13 factorial by 3, बीच में कहीं पे आएगा 13 factorial by 11 and plus 13 factorial by 12 and 13 factorial by 13. Can I say except this term? ठीक है, every term will be having 11, क्योंकि 13 factorial by 11 में ये क्या आ जाएगा, that is equal to 13 into 12 into 11 into 10 factorial by 11, और ये 11 11 cancel out हो जाएगा. So rest every term except this term 13 factorial by 11, every term is perfectly divisible by 11. Yes or no? Please tell me. क्योंकि किसी में 11 तो cancel नहीं होगा, so every term will be divisible by 11 except 13 factorial by 11. So 13 factorial by 11 is equal to 13 into 12 into 10 factorial by 11. If I divide 13 by 11, what is the remainder? 13 by 11, the remainder is 2. 12 by 11, the remainder is 1. And 10 factorial by 11, याद आ रहा है, नंबर सिस्टम में पढ़ा था हमने. P minus 1 factorial when divided by P, it always gives us a remainder of P itself. Yes or no? P minus 1 factorial by P, it always gives us a remainder of P itself, where P is a prime number. So 10 factorial by 11, the remainder is 10. So this is 20 and 20 by 11. 20 by 11, the answer will be comes out to be 9. So again, it's not a straightforward question. Remainder का question है, but घुमा फिरा के है. Is that clear? Can I move ahead? 73 and 7. अच्छा, 73 तो मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, तो डिस्कस करूं अभी. इसका करेक्ट आंसर है, मुझे याद है 73 मैंने डिस्कस किया हुआ है क्लास में एक बार. द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 73 इज, बट इफ यू वांट मी टू डिस्कस आई कैन डिस्कस इट, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. क्योंकि इसके बाद तो डी. द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 70 इज ऑप्शन 4 was easy. Lot of you have got it right also. 74 was easy. I think ये 1 से स्टार्ट हो रहा है या 2 से स्टार्ट हो रहा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. अच्छा, आज मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं एक सेकंड. 74 मैं बता देता हूं. 74 क्या आ जाएगा, log of 100 factorial to the base 1 plus log of 100 factorial to the base 2 plus log of 100 factorial to the base 3 and so on. So this is equal to log of 100 factorial, और बेस सारे क्या हो जाएंगे, नहीं ये उल्टा लिख दिया ना मैंने डिनोमिनेटर में. सो 1 अपॉन log of 100 factorial to the base 1 plus 1 upon log of 100 factorial to the base 2 plus 1 upon log of 100 factorial to the base 3 and so on. ऊपर जाएगा, रिवर्स करूंगा तो ये हो जाएगा log 1 to the base 100 factorial plus log 2 to the base 100 factorial plus log 3 to the base 100 factorial and so on. So basis same है 100 factorial and all the numbers 1 into 2 into 3 into 4 so on till 100. So I'll get log of 100 factorial to the base 100 factorial, which is equal to 1. So that's why answer is option number 3. Is that clear to all of you? Question number 74. अच्छा, how many of you have scored more than 7? 7 से ज्यादा कितने लोगों के सही आए मार्क्स? More than 7 marks. More than 7 marks is a good score to clear the sectional cutoff of this section. और 7 marks आ सकते हैं. That's why I'm saying कि that एक ऐसा पेपर है ना जिसमें तुम मार्क्स स्कोर कर सकते हो. The only thing is that you need to solve lots of question, बस और कुछ नहीं. मतलब इजी सेटस आइडेंटिफाई करो और उन्हें अटेम्प्ट करो. दैट में टाइम बहुत होता है, 3 घंटे 3.5 घंटे का पेपर है, दैट इज इनफ टाइम.
ओके, पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए इन दिस क्वेश्चन हाउ टू ड्रॉ अ स्विमिंग पूल. नहीं. ओके, लेट मी ड्रॉ द स्विमिंग पूल फर्स्ट ऑफ ऑल. मैंने बताया था व्हेनेवर यू नीड टू ड्रॉ अ स्विमिंग पूल, ठीक है, ऑलवेज डू वन थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज मेक अ क्यूब वाइड. फिगर टू द स्केल नहीं है, बट आई एम एज्यूमिंग कि क्यूबाइड समझ में आ गया. और दूसरा ऐसे एक्सटेंड कर दो. सो दिस इज अ स्विमिंग पूल. फिगर क्लियर है सबको? दिस इज अ स्विमिंग पूल. ठीक है, ये मैंने थोड़ा ये लाइट से कलर से ड्रॉ किया है क्योंकि इनसाइड एरिया है. ठीक है, दिस इज द स्विमिंग पूल. अब a rectangular swimming pool is 48 meter long and 20 meter wide. 48 and 20. The shallow edge of the pool is 1 meter deep. Okay, the shallow edge of the pool is 1 meter deep. So this is 1 meter. अच्छा, shallow edge is 1 meter. ठीक है. And for every 2.6 meter that one walks one up, for every 2.6 meter, if I am walking 2.6 meters, one walks up the inclined base of the swimming pool, one gains an elevation of 1 meter. तो एलिवेशन ये 1 मीटर का आ जाता है. तो ये 2.6 है, ये 1 है, एलिवेशन इज ऑफ 1 मीटर. व्हाट इज दिस डिस्टेंस? कैन एनीवन टेल मी? अनिशा बताओ क्या होगा? दैट इज 2.4. ठीक है, 5 12 13 का ट्रिपलेट है 2.4. एंड दिस टोटल इज 48. दिस टोटल इज इक्वल टू 48. तो 48 बाई 2.4, 48 बाई 2.4, 48 बाई 2.4 इज 20. ठीक है ना, तो 20 स्टेप्स वो ले रहा है. ठीक है, विच मीन्स दिस हाइट इज इक्वल टू 1 into 20, which is equal to 20. Is that clear now? Please tell me that this one is 20 और ये 1 हो गया. अब इसके मैंने दो तरीके बताए थे, ऊपर वाला वॉल्यूम और नीचे वाले का वॉल्यूम. इसको अगर थोड़ा सा ऐसे विजुअलाइज करके ऐसे ले लो तो ऐसे भी कर सकते हो. द वॉल्यूम ऑफ द अबव क्यूब प्लस हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब. और if you try to visualize here, basically it's nothing but we know that in any three dimensional figure volume is always equal to क्या होता है? base area into height. And here the figure is trapezium. अगर तुम इसके सामने वाले फिगर को देखो, फ्रंट व्यू, the front view is actually nothing but a trapezium, isn't it? The front view is nothing but it is a trapezium. This length is equal to 1, this length is equal to 21, and the distance between the two parallel sides is nothing but that is equal to 48. So base area is equal to half. Trapezium का area क्या होता है? Half into sum of parallel sides. Sum of the parallel sides is 22. ठीक है, into distance between the two parallel sides 48 into height. तो ये एक front figure base है और ऐसी back base है, and the distance between these two bases is 20. So the height is nothing but 20. So multiply this one. So answer is equal to 11 into 48 into 20. That will be the final answer. So I hope that now this is clear to all of you. Clear है ये? Okay, and the basic reason why I'm discussing all the papers, XAT papers, to such that you'll get an idea कि XAT के paper में you need to do a very very smart work. Not necessary to attempt all the questions. और easy questions identify करना है बस. 1 round 2 round ऐसे करके और मिल जाएंगे. 7-8 क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे जो you can find out easily. Okay, so we'll end the session here. All right, we'll end the session here. अच्छा, one thing which I want to discuss here कि अब मुझे तुम ही बताओ, as lot of you have got IFT calls और बाकी लोगों की नरसिंह मुंजी और धीरे धीरे अब सारी कॉल्स आएंगी.
78 का आंसर क्या है? 78 का आंसर, एक मिनट मैं बता देता हूँ, ऑप्शन 3। 78 का ऑप्शन 3 है। आई थिंक ये तो फिर भी इजी था। डीआई तो एज यूजुअल टफ ही रहता है इसका। 79 का आंसर इज ऑप्शन 2 एंड 80 का आंसर इज ऑप्शन 3। ओके, ऑलराइट। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि हाँ, बता दिया 79 का भी। 79 is 2. So I am going to create, मुझे अब एक जगह, so that one of the way you all are already connected through via WhatsApp. WhatsApp पे तुम सब लोग हो, almost all of you are on the WhatsApp, and so ठीक है, and you all can connect. But इसमें भी कुछ हाँ, IFT के सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस करेंगे मोहित किसी और दिन, ठीक है। there will be a session on IFT स्पेशल सेशन, उसमें एग्जैक्ट पैटर्न आई थिंक एक वीक पहले पता चलेगा दैट का, रोहित। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि क्या करना है हमें, हाँ, ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड ऑन दिस, क्या कहते हैं, यहाँ पे सब लोग कनेक्टेड है ना, किससे? व्हाट्सएप पे तो ऑलरेडी है सब लोग, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग व्हिच कैन नॉट बी शेयर्ड विद द व्हाट्सएप, और अब सबकी कॉल्स आ रही है, सो आई एम प्लानिंग टू मेक अ ग्रुप, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैंने काफी सोचा, एक तो एफबी पे एक ग्रुप बना दो, जो हर साल बनाते रहता हूँ, वैसे तो थ्रू आउट ईयर रहता है, बट इस साल मैंने अवॉइड किया था। एफबी बंद है, तभी तुम्हारी कॉल आई है ना, आईएफटी से रोहित, एफबी बंद है तो, ऑलराइट। अच्छा, मुझे फिर ऑप्शन बताओ और कहाँ पे बना दे। द रीजन इज क्योंकि जीडीपीआई के लिए ना द कंटेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन उमेश सर विल स्टार्ट टेकिंग योर सेशन, ठीक है, सो एवरी डे ही विल पोस्ट लॉट ऑफ कंटेंट्स एंड लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट लिंक्स, बहुत सारे वो इंपॉर्टेंट लिंक वो पेस्ट करेंगे, ठीक है ना। ही विल शेयर विद यू ऑल सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि देयर हैज टू बी वन फोरम वेयर इन ही कैन ऑलवेज शेयर हिज आइडियाज, हिज थॉट्स, एंड जो भी है वो सारी चीज वहां पे शेयर करते रहे। तो व्हाट्सएप पे तो वो पता ही नहीं चलता है ना कि इतने सारे आते हैं, वो आगे पीछे मैसेज चले जाते हैं, सो वी आर नॉट एबल टू गो थ्रू दैट, सो दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि फेसबुक ग्रुप पे ही बना देता हूँ, क्योंकि आई हैव सीन दैट गूगल पे बनाऊंगा। हाँ, अब कॉल आ गई है तो रोहित लॉग इन कर लेगा, ठीक है। एंड अनदर एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ गूगल इज ना कि ऐप पे, गूगल ऐप, ठीक है, गूगल जो ग्रुप्स है ना वो ऐप पे एक्सेस नहीं कर सकते मोबाइल फोन पे, दैट्स द बिगेस्ट इशू। बिकॉज वेन एवर इवन इफ योर मोबाइल फोन इज इन फ्रंट ऑफ यू, तो आराम से अगर फेसबुक के ग्रुप पे सर पोस्टेड एनी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल से तुम्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तुमने कभी भी वो ग्रुप्स पे कर लिया। एंड दोज हु आर नॉट ऑन एफबी ग्रुप, आई सजेस्ट वन थिंग, एक अकाउंट क्रिएट कर लो जस्ट, और बस कोई भी फ्रेंड लिस्ट में किसी को ऐड मत करो, बस केवल अल्फा न्यूमेरिक का ग्रुप ज्वाइन कर लो। सो आई हैव क्रिएटेड अ ग्रुप। गूगल ग्रुप में काफी सारे इश्यूज है, मैं देख रहा था, उसमें यूजुअली वो मेल में जाते हैं, सारी की सारी चीजें मेल पे जाती हैं। गूगल ग्रुप से अगर कुछ भी पोस्ट करेगा तो मेल पे नोटिफिकेशन आ जाती हैं, बट एफबी पे पढ़ना ज्यादा इजी रहता है। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं, जस्ट अ मिनट। देखो, लिंक एक्टिव है, जो मैंने लिंक शेयर किया था ना, दैट लिंक इज एक्चुअली एक्टिव, ठीक है, वो लिंक बिल्कुल भी एक्टिव है। द ओनली थिंग इज कि वो सीक्रेट ग्रुप है, एंड दैट सीक्रेट ग्रुप यू कैन नॉट व्यू दैट सीक्रेट ग्रुप जब तक कि मैं उसमें खुद ऐड नहीं करूंगा, और इफ यू आर नॉट इन माई फ्रेंड्स लिस्ट। तो मैं एक मिनट, तुम लोग मुझे बताते जाओ, मैं सबको अभी यहीं पे हाथों हाथ ऐड करते जाऊंगा, इफ आई एम एबल टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, क्योंकि वो मैंने सीक्रेट ग्रुप बना रखा है इसलिए है। तो मुझे नहीं पता है ना, एक मिनट, वैसे तो पूरे साल ही ग्रुप रहता था, बट इस बार मैंने पूरे साल ग्रुप नहीं बनाया था।
एक मिनट, ये मेरा लैपटॉप ना बहुत हैंग हो रहा है। अब बताओ किस किस को ऐड करते जाना है। मैं नाम लिखता हूँ और अपने अपने चेहरे पहचान लेना। आई एम श्योर दैट यू ऑल कैन आइडेंटिफाई योर प्रोफाइल। मुझे नहीं पता, इफ यू आर नॉट इन माय फ्रेंड्स लिस्ट तो मैंने रोहित सिंह, रोहित सिंह कौन सा हो इसमें? रोहित सिंह तुम बताओ मुझे। दो दो रोहित सिंह है, ये कृष्ण भगवान वाले रोहित सिंह हो या ऊपर वाला रोहित सिंह है? पहले वाला, ठीक है। और किसे ऐड करना है मुझे बताते जाओ। रचित अरोड़ा, रचित अरोड़ा नीचे वाला, ये तो रचित अरोड़ा यही है नीचे वाला। और बताओ। एंड वन ऑफ द एडवांटेज इज दिस वन दैट, अच्छा एक और एडवांटेज था ग्रुप्स का, क्योंकि जब भी सब लोग इंटरव्यूज दे के आते हैं ना, दे ऑल कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस। तो इससे पता चलता है कि ओके आईएफटी में आज किसी का इंटरव्यू है, नेक्स्ट डे किसी और का इंटरव्यू है, उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे, ये सारी चीजें पता चलती रहती है। आशीष, कौन सा वाला आशीष है? आशीष कौन सा वाला है भाई यहाँ पे? एक मिनट, मुझे ये चैट थोड़ा अलग से खोलने दो। मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ ना, रिकॉर्डिंग पॉज